मसुरीक दालि एहि क्षेत्रमे बहुत उत्पादन होइत अछि। खास कऽ क्रीम त्रीम बनाबऽमे मसुरीके तऽ एखन बहुत मांग होइत अछि। ताहि दुआरे ई राहड़ि आ मसुरी करीब करीब मोलके हिसाबसँ एके अछि। मुदा इहो सत्य अछि जे मसुरीके दालि अशुद्ध मानल जाइत अछि। एहिठाम बहुतो लोक जखन ब्राह्मण भोजन करबै छथि, साधु भोजन करबै छथि तऽ मसुरीके दालि नहि दै छथि। विधवा महिलासब तऽ ई खेबे नहि करैत अछि। ई मसुरी दालिके कथा की छै, एहिपर आइ आजुक मॉडल खबरमे हमसब चर्चा करै छी। सबसँ चर्चित पौराणिक कथाक अनुसार समुद्र मंथनक क्रममे अमृत निकलल छल। अमृत देवतामे बाँटल जा रहल छल। एहि बीच सर्वभानु नामक एकटा राक्षस बीचमे आबि कऽ बैसि गेल। जखन भगवान विष्णुके ई बातक पता चललनि, ओ सुदर्शनसँ ओकर धड़ आ सर अलग कऽ देलनि। ई राक्षसक माथक भागसँ राहु आ धड़क भागसँ केतुक जन्म भेल। मान्यता अछि सर्वभानुक खूनसँ मसुरीक दालिक उत्पत्ति भेल। एहि दुआरे रक्तसँ उत्पन्न मानल जाइत अछि आ मांसाहारी श्रेणीमे एकरा राखल जाइत अछि। एकटा मान्यता अनुसार मसुरीक दालि तामसिक गुणवला होइत अछि। तामसिक गुणक अर्थ अछि जे अंधकार, निष्क्रियता आ अशुद्धतासँ जुड़ल। वैज्ञानिक दृष्टिकोणसँ देखल जाय तऽ मसुरीक दालिमे प्रोटीनक मात्रा अधिक होइत अछि। किछु लोग एकरा उच्च प्रोटीन रूपमे मांसक समान मानैत अछि। ब्राह्मण आ साधु संत आध्यात्मक जीवन जीवैत छथि आ शुद्धता पर विशेष जोर दैत अछि। ओ मानैत छथि मसुरीक दालि तामसिक अछि आ हुनक आध्यात्मिक विकासमे बाधा आनि सकैत अछि। पहिलेके समयमे विधवाके शाकाहारी भोजन करऽके मात्र अनुमति छल, कारण लहसुन, प्याज आ मसुरीके दालिके छोड़ि कऽ एहन मानल जाइत छल मसुरीके दालिमे उपस्थित प्रोटीन विधवाक लेल हानिकारक भऽ सकैत अछि। वैज्ञानिक दृष्टिकोणसँ देखल जाय तऽ मसुरीक दालि पौधासँ निकलैत अछि आ एकरा मांसाहारिक श्रेणीमे नहि राखल जा सकैत अछि। मसुरी दालिके कथा अहाँसब सुनू। ओना कथामे जे कहै, वैज्ञानिक कारण एहिसँ दूरे अछि। अहाँ सुनने हेबै। एहिमे बेसी प्रोटीन भेलाके कारणसँ सेहो बहुत गोटे नहि खाय चाहैत अछि। एकर धार्मिक कारण एकटा छै, लेकिन वैज्ञानिक कारण एहिमे कोनो अस्वीकार नहि कर